Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are doing our chapter 5th. The chapter's name is Continuity and Differentiability of Mathematics, and we are on exercise 5.5 of NCERT. Up to question 16th we have done. This is our 17th question of 5.5. Differentiate x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9 इन 3 वेज. इसको 3 टाइप से अपने को डिफ्रेंशिएट करना है. फर्स्ट है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, एक बार हमको प्रोडक्ट रूल लगाना है. सेकंड बाय एक्सपांडिंग प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पोलिनोमियल. पहले हमको प्रोडक्ट को एक्सपांड करके सिंगल पोलिनोमियल में लाना है और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है. और थर्ड है बाय लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, मतलब दोनों साइड का लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट करना है. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कोई सी भी मेथड को फॉलो करके जब रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो क्या वो सेम आंसर दे रहे हैं. लास्ट में ये हमसे कंक्लूजन पूछा हुआ है, तो लास्ट में कंक्लूजन भी हमको लिखना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग इट बाय फर्स्ट मेथड. सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम. y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. By taking it first function and this one as second function, we can apply product. This we are taking first function, this bracket, and this we are taking second function. So d by dx of first function into second function is equal to first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first function with respect to x. So this is the formula. This you have to remember. This is the applied formula. Now here this is first function. So dy by dx is equal to first function, that is x square minus 5x plus 8 into d by dx of second function, that is x cube plus 7x plus 9, x cube plus 7x plus 9. So dy by dx is equal to, and then second into differentiation of first plus second into differentiation of first, d by dx of first, that is x square minus 5x plus 8. See, first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. हमने क्या अप्लाई किया यहाँ, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड. पहले फर्स्ट लिखा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड लिखा, प्लस सेकेंड फंक्शन लिखा, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7x इज 7. यहाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किया तो वो 3x स्क्वायर हो जाएगा. x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, तो 1 इंटू 7 इज 7 और डिफरेंशिएशन ऑफ 9 इज 0. तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 7 होगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बी 2x माइनस 5. जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x. और डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है तो 1 इंटू 5 दैट इज 5. और ये प्लस 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया. अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है.
So dy by dx is equal to x square into 3x square plus 7 minus 5x into 3x square plus 7 plus 8 into 3x square plus 7. Now plus x cube into 2x minus 5 plus 7x into 2x minus 5 plus 9 into 2x minus 5. अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15 x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर है तो 2 प्लस 1 दैट इज पावर विल बी 3 माइनस इंटू प्लस इज माइनस 7 5 ज़ा 35x प्लस 8 3 ज़ा 24x स्क्वायर plus 8 7 ज़ा 56 प्लस x क्यूब इंटू 2x दैट इज 2x रेज टू द पावर 4, फिर x क्यूब माइनस 5 का इंटू होगा तो माइनस 5x क्यूब, देन प्लस 7x इज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2x, देन 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर दैट विल बी प्लस 14x स्क्वायर. नाउ 7 इंटू माइनस 5 इज माइनस 35, हियर इट इज प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 35x plus 9 2 ज़ा 18x plus into minus is minus 9 5 ज़ा 45. So what will be the result for dy by dx? dy by dx is equal to, see now we have to select these terms, power 4 3x raised to the power 4 plus 2x raised to the power 4 that is 5x raised to the power 4. Now x cube terms minus 15x cube minus 5x cube that will be minus 20x cube. Any other term related to x cube? No. So minus 15x cube minus 5x cube that is minus 20x cube. Now see x square terms, 7x square and 24x square, 31x square, 31x square and 4x square, 31 and 4 35 and 10 45, 45x square, so it will be 45x square, 45x square. Now x terms minus 35x, this is minus 35x, minus 35x minus 70x, here it is minus 70, now minus 70x and plus 18x, minus 70 plus 18 means 62 52 minus 52x, so it will be minus 52x, because if we add 18 in it then it will be minus 70, minus 52 that is minus 70 plus 18 that is minus 52, so 52 and 18 will be 70, and here it is 56 minus 45 that is 6 and 5 11, so it will be positive 11 5 6 11. So this is the conclusion. By which method? By applying the product rule. So this is the answer by first method. Now see second, by expanding product to obtain single polynomial. Means let y is equal to, first of all we have to write this y, x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9. Now on multiplying, we have to multiply it first of all. So y is equal to, this will be x square, here from here we can see x square into x cube plus 7x plus 9, then minus 5x into x cube plus 7x plus 9
प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. Now we may do multiplication first of all and then differentiation will be applicable. So y is equal to x raised to the power 5 because 3 plus 2 is 5. X square is when multiplied by 7x, then it will be 7x cube. ये 7x cube हो जाएगा. Now 9 is multiplied by x square, that is 9x square plus 9x square. Now minus 5x into x, that is minus 5x raised to the power 4. Now minus into plus is minus. 5 7 is 35x square. And then minus into plus is minus, and 5 9 is 45x, minus 45x plus 8x cube plus 8 7 is 56x plus 8 9 is 72. Now we have to add the like terms. Here it is x raised to the power 5 single term it is. ये तो सिंगल टर्म है x raised to the power 5 वाली. अब x raised to the power 4 वाली टर्म देखिए, ओनली वन टर्म इज देयर, दैट इज माइनस 5x raised to the power 4. Now x cube terms, see x cube terms, 7x cube and 8x cube, 15x cube, 15x cube. So plus 15x cube. Now x square term, 9x square minus 35x square. So 9 minus 13, that is 5 4, 26 minus 26x square, minus 26x square. And then x term, minus 45x plus 56x, that is plus 11x plus 72. So this is the product. Now we can differentiate it. So on differentiating with respect to x, so dy by dx is equal to 5x raised to the power 4, or we may write one more step here, d by dx of x raised to the power 5 minus 5 d by dx of x raised to the power 4 plus 15 d by dx of x cube minus 26 d by dx of x square plus 11 d by dx of x and plus 0 because differentiation of constant is 0. Now see dy by dx, it is equal to 5x raised to the power 4 plus 5 into 4x cube, differentiation of x raised to the power 4, that is 4x cube plus 15 into 3x square. Now minus 26 into 2x, minus 26 into 2x, and then plus 11. Differentiation of constant is already we have written 0, d by dx of x is 1, so it is 11. See, now check the answer, 5x raised to the power 4, 5 4 the 20x, sorry it is minus 20x. Now plus 15 3 is 45x square. Now minus, see 26 into 2, that is 52x, and plus 11. This is only the answer which matches with our first answer. So these two parts are over. Now see third part of this question only, this only. By logarithmic differentiation, let y is equal to x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9 on taking log, जब हम log लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा log y is equal to log x square minus 5x plus 8 into
एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इसमें हम प्रोडक्ट लगाएंगे अब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन, सॉरी लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन दैट इज इक्वल टू log m plus log n. So we may apply this formula here. So now this will become log y is equal to log x square minus 5x plus 8 plus log x cube प्लस 7x प्लस 9. जब इसको log से करेंगे तो ये log m है, ये n है, तो log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n हो गया. नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देन दिस विल बिकम 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. अगर मैं इसको x कंसीडर करता हूं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ऑल्सो, क्योंकि x तो था नहीं, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस ऑल्सो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस log x cube plus 7x plus 9, that will be equal to 1 upon x cube plus 7x plus 9 into d by dx of what it is x cube plus 7x plus 9, x cube plus 7x plus 9. इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको, बिकॉज इट इज नॉट log x. Of course we are applying log x formula, that is 1 by x, but it is not x, so we have to differentiate this also. ये चूंकि x तो नहीं है तो इसको भी हमको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पे भी किया. अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे एंड दैट y विल बी शिफ्टेड इन न्यूमरेटर ऑफ RHS. सो दिस विल बिकम dy by dx is equal to, first of all differentiate this and y will be shifted, that will be y, and here it is x square differentiation is 2x minus 5x differentiation is 5. So 2x minus 5 differentiation of this 8 is 0. So 2x minus 5 upon x square minus 5x plus 8, x square minus 5x plus 8, and after that plus, see here differentiation of x cube is 3x square, differentiation of 7x is plus 7, so 3x square plus 7 upon x cube plus 7x plus 9, x cube plus 7x plus 9. So what we can do now, dy by dx is equal to x square, we will write it later, y, first of all 2x minus 5 into x cube plus 7x plus 9 plus, after adding, plus 3x square plus 7 into what it is x square minus 5x plus 8 upon x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9. Either we write this y as this or we may write this y, because it is only the value of y. See here, this we have taken y, so we may write this part as y, so this y will be cancelled then, and this we have to multiply. So dy by dx is equal to y into 2x into x cube
plus 7x plus 9 minus 5 into x cube plus 7x plus 9 plus 3x square into x square minus 5x plus 8 plus 7 into 7 into x square minus 5x plus 8, and in denominator it is y only, so this y will be cancelled. Now we may multiply it, so dy by dx is equal to see 2x into x cube, that is 2x raised to the power 4. Now 2x into 7x, that is 14x square. Now 2x into 9, that is 18x. Now minus 5 into x cube, that is minus 5x cube. Now minus 5 is multiplied by plus 7, minus 35x. Now minus 5 into plus 9, that is minus 45, because minus into plus is minus. Now plus 3x square is when multiplied by x square, then it will be 3x raised to the power 4. Minus 5 3s are 15 and x raised to the power 3, because 2 plus 1 power will be added. Now plus 3 8s are 24 x square plus 7 x square minus 35x plus 56. Now check our answer. See, 2x raised to the power 4 plus 3x raised to the power 4, 5x raised to the power 4 again. Now see x cube term, minus 5x cube minus 15x cube minus 20x cube, this is also correct. 14x square and 24x square, 14x square and 24, that is 38. 38 and 7, 45x square. See, x square term. 14 plus 24, 38, 38 plus 7, 45x square, and then minus 35, and plus 18. Minus 35, minus 70x plus 18x, that is minus 52x. Now 56 minus 45, that is plus 11. So, yes, our answer is same. हमारा आंसर तीनों केसेस में सेम आए. So this question number 17 is now over. Thanks a lot for watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and please don't forget to like it, subscribe it and share it. Thanks a lot.